Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is New Questions and Ideas. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल. बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल्स इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट वन है बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल प्राकृत सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. सेकेंड वन है ही स्पेंट हिज लाइफ इन ट्रैवलिंग ऑन फुट गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल स्टिल ही पास्ड अवे एट कोसिनारा. थर्ड वन है ही आल्सो एनकरेज्ड peoples to think for themselves rather than to simply accept what he sent. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, फर्स्ट वन है द बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस. इसका आएगा फॉल्स. देखिए दूसरा है सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. ट्रू. सेकेंड वन है थर्ड वन है The Buddha taught that karma has no effect on our lives. False. The Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya. True. Upanishadic thinkers believed that Atma and Brahman were ultimately one. True. Move to the next question. देखिए what were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer. इसका आंसर देखिए the questions which Upanishadic thinkers wanted to answer were first one है they wanted to know about life after death. सेकेंड वन है दे वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड. थर्ड वन है दे बिलीव्ड दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा एंड और इंडिविजुअल सोल. फोर्थ वन है दे बिलीव्ड द अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा. आंसर देखिए द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा आर फर्स्ट वन ही टॉट ए सिंपल ड्राइव मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम. सेकेंड वन है द मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. थर्ड वन है टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. अगला देखिए वाई डू यू थिंक अनघाज मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा. Angha's mother wanted her to know about the story of Buddha because she was going on a school trip to Varanasi. Varanasi has many places like Sarnath which are closely related to life of Buddha. It would have enriched her knowledge about one of the greatest teachers and preachers of ancient times. Next देखिए do you think it would have been easy for slaves to join the Sangh? Give reason for your answer. Those who wanted to join the Sangh had to take permissions of their parents or their master. If the slave wanted to join the Sangh, they had to take the permissions of their master. The masters would not give permissions easily because the slaves worked very hard and did not get any wages. So it was difficult for the slaves to join the Sangh. Move to the next question. Why did new religions arose about 2500 years ago? देखिए आंसर न्यू religions arose about 2500 years ago because this was the time of rapid change in the lives of the peoples. New cities were developing and life was changing in the villages also. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. Next देखिए why was the stupa at Sarnath built? देखिए आंसर द स्तूप एट सारनाथ वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज. थर्ड वन है नेम द लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्ध इन प्रीचिंग हिज मैसेज. व्हाई डिड ही यूज दिस लैंग्वेज. आंसर देखिए द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स प्राकृत सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. नेक्स्ट वन है व्हाट डज द वर्ड उपनिषद मीन्स. व्हाट डज इट कंटेन. उपनिषद जनरली मीन्स approaching and sitting near. They were a part of the later Vedic text. The text contained conversation between teachers and students. Often answers were presented through simple dialogues. Move to the next question. Who were the Upanishadic thinkers and teachers? देखिए most Upanishadic thinkers and teachers were men, especially Brahmins and Rajas. Some women thinkers like Gargi, who was famous for learning, also participated in debates held in the royal courts. Poor people did not take part in the discussions. One such exception was Satyakama Jabala, the son of the slave mother Jabala, who later developed the Upanishadic ideas.
The Upanishadic ideas were later developed by the famous thinker Shankaracharya. देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज पाणिनि, what are his contributions to Sanskrit literature? Panini prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in a special order and then used them to create formulas like those found in algebra. He used them to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. That's all for today. Thank you. Have a nice day.